So, guys, welcome to Petra, one of the wonders of the world and world's UNESCO heritage site. In the previous episode, we traveled from Wadi Rum to Wadi Musa, where we have the iconic city of Petra. मिलते हैं आपसे पेट्रा में. In Petra, I stayed at one of these hostels called the Petra Cabin Hostel. It was just 5 minutes walking distance from the Petra Visitor Center. For $15 a night to stay at this hostel, I found this deal was very attractive. It has those Japanese-style beds which looks extremely cozy. Just like the typical bunk beds in the hostels, here also we have top and bottom beds. I got a lower bed with a very nice view looking at the Petra side directly. I love this space as I woke up witnessing a spectacular sunrise from here. The common area of the hostel is a big hall featuring an open kitchen and a dining space. The reception of the hostel is also located in the same area. From this big size glass windows of the hostel, you can have a very good view of the entire Petra town. हाय एवरीवन, ये है पेट्रा का विजिटर सेंटर, जहाँ से कि जो है आपकी एंट्री अलाउड होती है टू द हिस्टोरिकल साइट ऑफ पेट्रा. तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे. आज मैंने पेट्रा नाइट है, बेसिकली मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडेज़ को होता है. तो फॉर्चुनेटली आई एम हियर ऑन मंडे, सो आई एम गोइंग एंड टू विटनेस दिस. Now we are going towards the entrance gate of the site. I'll have to show the Petra night ticket which I have purchased separately for 17 JD. और उसके अलावा आपको जॉर्डन पास अगर आपने लिया है तो उसको भी दिखाना पड़ेगा एंट्री पर्पस से. Remember to carry your passport along with you as well. So I have just shown the ticket and I have got entry to the site now. So I am inside the Petra site now. Follow these lights on the sides of this passage for the direction towards the Treasury, which is the most prominent spot of Petra site. The walk from the entrance gate to the Treasury site takes about 30 minutes time. So guys, ये है वो नज़ारा जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं. Welcome to Petra, one of the wonders of the world. So guys, पेत्रा बाई नाइट का शो ख़त्म करके अभी मैं वापस अपने होटल के पास आ गया हूँ. ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की पूरी वॉक थी. कैनियन के अंदर जो है वॉक करना इतना आसान नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है. जगह बहुत ही खूबसूरत थी. सो आई थॉरली इन्जॉयड, और आशा करता हूँ कि अगर आप लोग कभी आते हो यहाँ पे तो यू विल ऑल्सो इन्जॉय. ये एक लाइफ टाइम एडवेंचर है. तो अगर आप पेट्रा आ रहे हैं और रात को रुक रहे हैं इधर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को,
सो मेक श्योर डू नॉट मिस दिस शो. काफ़ी अमेजिंग रहा, मुझे तो बहुत मज़ा आया. So next day, it was time for me to visit this iconic place once again during the daytime. I was definitely curious to know how it would look in broad daylight. This is the entrance gate, and that side is the Petra Visitor Center, from where you have to show your Jordan pass to gain entry to the historical site. So let's go. So entrance gate पे जाने से पहले you have to come to this ticket counter. So if you have already taken a Jordan pass, so you'll have to come and show them. They are going to scan the ticket, the Jordan pass, and then they are going to issue a ticket like this. So collect it before you go to the entrance. So just at the entry gate, near the visitor center, we have got these cafes and restaurants and some souvenir shops also, जहाँ से you can buy things of your choice, whatever you like. We have got this Petra guest house hotel. So if you don't want to walk long distance, then probably this is probably the closest where you can afford to stay. This is the main entrance where you have to show your Jordan pass and your tickets, and along with your passport also. We are now entering inside the site of Petra. So as soon as you enter the site, you will find a lot of horses and donkeys riders who will come near you, and then they'll ask you to ride the horse because it is included in the Jordan pass. Don't believe them, this is all scam. In fact, a lot of guys in the hostel, they have told me about this, so don't get fooled by them. So just be little cautious. You can politely say no to them and can move on. So actually इन लोगों के लिए थोड़ा सा बुरा भी लगता है मुझे, because this is a tourist city and a lot of people are actually dependent on tourism here. So if you can afford to help them by way of riding horse, or by taking a tourist guide, or buying something from them, you should do that as much as you can, और जितना भी आप afford कर सकते हैं, और whatever way you can support. मैंने कुछ छोटे मोटी चीज़ें किया, like I bought this scarf or have done something, but it depends on you. I mean, if you can afford it, why not? You can go ahead and do it. So कुछ 10 मिनट की वॉक करके आपको जो है, you will enter inside the canyon. So off road क्रॉस करके, थोड़ा सा कच्चा रोड क्रॉस करके, now we are entering to the canyon side. So this is going to be another 20 minutes walk. Walking inside these canyons is like an amazing experience. यहाँ पे अक्सर पैर में मोच आने का ख़तरा रहता है, बिकॉज़ ये थोड़े से अनइवन से हैं. रात को मेरे साथ छोटा सा एक कांड होते होते रह गया. आई ऑलमोस्ट फेल. और यहाँ पे ये भाई साहब एक बेडुइन म्यूज़िक प्ले करते हुए. यहाँ पे लोकल बच्चे हैं जो कि ऐसे ही बैठे रहते हैं, और दे काइंड ऑफ सेलिंग समथिंग हियर एंड देयर, कुछ ना कुछ छोटे मोटे. इट्स लाइक एवरीबडी इज़ इनटू टूरिज़्म. अच्छा भी है, बेसिकली मेन सोर्स ऑफ इनकम है इनके लिए. दे आर हैविंग ए रिलैक्स लाइफ. अगर आप इन पत्थरों के ऊपर ये जो निशान देखेंगे, तो बेसिकली ये निशान जो है पानी के निशान है, जिससे ये पता चलता है कि सदियों पहले, मतलब हज़ारों सालों पहले, दिस एरिया मस्ट बी अंडर द वाटर. सो ये कैनियन के साइड में जो नालियाँ दिखाई दे रही हैं, बेसिकली यहाँ पे पानी आपका कलेक्ट होके यहाँ से फ़्लो करता था. तो ऊपर से जो भी पानी आता था वो यहाँ से फ़्लो करता था. क्या अमेजिंग क्रिएशन है.
रॉक्स को देखिए, उनका कलर कैसा चेंज हो रहा है सनलाइट के अंदर. इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. सो कहते हैं कि पेट्रा से आगे कुछ 2 घंटे की और ऑलमोस्ट हाइक करने के बाद जो है देयर इज़ another important and famous attraction called monastery, and that is considered to be one of the best in this area, but वो काफ़ी दूर है और I don't think so I'll be able to go there. और ये अब सामने हम जो है पहुंच रहे हैं the historical site of Petra. और देखिए दिन के टाइम में ये कितना खूबसूरत लगता है. इसकी ब्यूटी एक अलग ही होती है. Guys, this is one of the best spots from where you can click wonderful photos of the treasury. So you can sit here and in your background you'll have this treasury. So this is like amazing place, and here we have these guys who are giving us some tea, and they're selling some local stuff, and this is a very nice place. And if you're coming to Treasury, do visit this place. They'll charge you some amount to come up and then click the photo, but it's worth visiting here. So we have to go down from this side all the way, just 2-3 minutes.